Hi everyone, I'm Shivani. Welcome to my channel. Today we'll do the remaining part of I Want to Drive a Car from Lost Spring by Anis Jung. आज हम पेज 18 की लास्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे. First I'll read out a few lines from the text, then explain it in English, followed by Hindi. So let's begin. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, the author watches a young girl, Savita, in a dull pink dress, sitting next to an older woman. She is melting and joining glass pieces to make bangles. Savita's hands are working automatically, just like a machine's gripping arms. She is doing it without any emotions or feelings, as she has to do this work every day. सविता नाम की एक छोटी सी बच्ची जिसने डल गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है, वो एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी हुई है. सविता कांच को पिघलाकर फिर उसे चूड़ियों के शेप में जोड़ रही है. उसके हाथ बिल्कुल मशीन में लगे टोंग्स या चिमटे की तरह ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं. ये काम वो शायद बहुत दिनों से कर रही है, तभी वो बिना किसी फीलिंग के मशीन जैसे काम कर रही है. आई वंडर if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. The author says she was curious to know whether Savita understands the meaning of bangles in Indian culture. The word sanctity means sacred or holy. The bangles symbolize a married woman's husband's long life or the blessed state of being married. ऑथर सोचती है कि क्या सविता को भारतीय संस्कृति में चूड़ियों के इम्पोर्टेंस या महत्व के बारे में पता है. सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता. क्या उसे मालूम है कि चूड़ियाँ सुहाग का चिन्ह होती है? It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. One day, Savita will suddenly realize the meaning of bangles. It'll dawn on her means to suddenly realize. It will be the day of her wedding when she will be dressed like a bride, her head covered with a red veil, her hands dyed with henna, and she would be wearing red bangles, just like the elderly woman sitting next to her who was also dressed like a bride many years ago on her wedding day. एक दिन अचानक सविता को चूड़ियों का महत्व समझ आएगा. जिस दिन वो सिर पर लाल घूंघट डाले, हाथ में मेहंदी लगाकर, लाल चूड़ियाँ पहनकर दुल्हन बनेगी, ठीक उसी तरह सविता के पास बैठी बुजुर्ग महिला बहुत सालों पहले दुल्हन बनी थी. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. The elderly woman is still wearing bangles, symbol of her suhag. Her wedding day when she wore them must have been a day full of hope, joy and dreams. But unfortunately, it did not bring any hope or joy in her life. That can be seen in her eyes that have lost their light or sparkle of hope. She says she has never experienced the basic human comfort of a full meal. She feels it is unfair that despite working so hard, she got nothing in return. बुजुर्ग महिला की कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं जो उनके सुहाग की निशानी है. अपनी शादी वाले दिन उन्होंने जब वो चूड़ियाँ पहनी थी, तब उनकी आंखों में आशा और खुशियों की चमक थी, पर अब उनकी आंखों से वो चमक गायब हो चुकी है. वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने पेट भरकर भी खाना नहीं खाया. क्या उनकी मेहनत का उन्हें ये इनाम मिला? Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. The woman's husband with a long beard says that he only knows bangle making.
And whatever he has earned from that, he has used it to make a house for his family. उस महिला के पति ने कहा कि उनको चूड़ी बनाने के सिवाय और कुछ नहीं आता, और उन्होंने जो पैसे कमाए उन पैसों से अपनी फैमिली के लिए एक मकान बनाया है. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. The narrator says, hearing the old man, it seems he has been able to achieve something that many of them can't, that is, building a home. This highlights the harsh reality that these people have to struggle even for basic necessities. So the old man has achieved something that others find difficult to achieve. नैरेटर को उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातों से ऐसा लगता है कि सर ढकने के लिए एक जगह होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी गरीबी में छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. वहाँ सर के ऊपर छत होना एक बहुत बड़ी बात है. The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. These lines highlight the extreme poverty and lack of options for these people. The author says she can hear the same complaint or cry of shortage of money from every house. They are so poor, they don't have enough to eat. राइटर कहती हैं हर घर से उन्हें एक ही रोना सुनाई पड़ता है. लोगों के पास चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं. वो इतने गरीब हैं कि उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. The younger generation repeats the same sorrow or complaints that their elders have been making. Nothing has changed with time. There has been no progress or development or opportunities with the passing of time. Years of mentally exhausting hard work has killed their ability to think and start something new or to dream. Young generation भी अपने से बड़ों के ही दुख और कंप्लेंट्स को दोहराता है. समय के साथ यहाँ कुछ भी नहीं बदला है. यहाँ लोगों को सिर्फ एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उनके लिए सपने देखना या नया कुछ शुरू करने की क्षमता खत्म हो गई है. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. The writer asks a group of young men, why don't they all come together and form a cooperative? A cooperative is when a group of people support each other and work collectively or collaboratively. These young men have been stuck in the same cycle of exploitation by the middlemen as their fathers and grandfathers. Middlemen are like agents between the वर्कर्स एंड द मार्केट. राइटर्स इन यंग लड़कों से पूछते हैं कि वो एकजुट होकर सहकारी संस्था क्यों नहीं बना लेते हैं. इससे वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं. ये लोग भी अपने बाप दादाओं की तरह बिचौलियों के चंगुल में फंस गए हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. This line shows their helplessness and fear. They say even if they get organized, it would be seen as a threat to the powerful people. Instead of getting protection by the law, they will be framed in false charges, then will be beaten by the police and dragged to jail. वो कहते हैं कि अगर वो अपने को संगठित करते भी हैं तो पावरफुल लोगों को ये एक धमकी जैसी लगेगी. वो इन लोगों का शोषण नहीं कर पाएंगे. तब गलत इल्ज़ाम में इन्हें फंसाया जाएगा और पुलिस इनको पीटेगी और इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा. There is no leader among them. No one could help them see differently. There is no one among them who could lead them or guide them. There is no one to unite them, help them, to try new solutions. उनमें से कोई भी लीडर नहीं है जो उनको गाइड कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सुलझा सके. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Their elders are also physically and mentally exhausted just like them.
Their talks move in a cycle or circle which revolves around poverty, apathy. Here, apathy means lack of interest or motivation because they feel their situation can never change. Greed of the middlemen and the exploiters and injustice. They are poor and law is on the side of the rich. यहाँ बुजुर्ग लोग भी इन यंग लोगों की तरह फिजिकली एंड मेंटली थक चुके हैं. उनकी बातें सिर्फ गरीबी, पावरफुल लोगों की लालच, उन पर हुए अत्याचार आदि के ही इर्द गिर्द घूमती है. उन्हें लगता है अपने इन हालातों से वो कभी नहीं निकल पाएंगे. कानून भी उनकी तरफ नहीं है. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. After listening to the bangle makers, the narrator realizes there are two worlds in which they are caught. One is the web of poverty in which these helpless people are trapped with no way to escape from this miserable condition. They are born in low caste, which is a stigma or a mark of shame for them, which adds to their sufferings. They do not get opportunities. They remain socially and economically बैकवर्ड. बैंगल मेकर्स से उनके दुख की कहानी सुनने के बाद नैरेटर को रियलाइज़ होता है कि दो अलग अलग दुनिया है. एक दुनिया गरीबी और दुखों की है जिसके जाल में ये गरीब और बेसहारा लोग फंसे हुए हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है. इसके अलावा वो निचली जाति में पैदा हुए हैं जिसके कारण समाज में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. लोग उन्हें नीची नज़र से देखते हैं और वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाते हैं. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. This line describes the second world, the world of powerful people who control them. They are the sahukars or the money lenders from whom these people borrow money and are trapped in debt. The keepers of law who are supposed to protect them, but they more often exploit the poor. The bureaucrats or the high government officials who have created systems that do not help the poor. Then the politicians who very rarely fulfill their promises they make. These people are trapped in their vicious circle. नैरेटर इस लाइन में दूसरी दुनिया की बात कर रही हैं जो कि साहूकार, नौकरशाही, राजनेता इत्यादि की बनी है जिनके चंगुल में फंसकर इन बेचारों की ज़िंदगी और भी दुखदायी हो जाती है और इनके जाल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन. इन दिस लाइन द नैरेटर हैज़ यूज्ड द वर्ड बैगेज metaphorically. The baggage here means burden. Together these people have burdened the child who is forced to carry the burden of poverty, caste discrimination, etc. that has passed on to him by his forefathers. इस लाइन में नैरेटर ने बैगेज वर्ड को मेटाफोरिकली यूज़ किया है. बैगेज या गरीबी और भेदभाव के बोझ को इन बच्चों पर थोप दिया जाता है जो उनको शायद सारी ज़िंदगी ढोना पड़ता है. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. The narrator says, before the child can understand the system, he accepts it just like his father had done even without realizing it. बच्चा जब तक कुछ समझ पाता है उसके ऊपर ये बोझ थोप दिया जाता है बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पिता पर थोपा गया था. To do anything would mean to dare, and daring is not part of his growing up. This line means that to think differently or choosing another path would mean to go against or to challenge the system for which a lot of courage is required. But they have not been taught to go against the system or challenge it. It is not part of their growing up. नैरेटर कहती हैं इन लोगों के लिए अलग कुछ करना, ज़्यादा हिम्मत दिखाना होगा जो उन्होंने कभी सीखा नहीं है. उनमें किसी चीज़ को चैलेंज करने के लिए हिम्मत करना बहुत बड़ी बात होगी. ये उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है. When I see a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. When the narrator sees Mukesh thinking and dreaming something different that makes her feel happy, Mukesh repeats that he wants to be a mechanic, motor mechanic. जब नैरेटर मुकेश को कुछ अलग सोचते हुए
देखती हैं या कुछ अलग ड्रीम करते हुए देखती हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। मुकेश फिर से दोहराता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from home. I will walk, he insists. Mukesh says to learn the skills, he will go to a garage. The garage is far away, but he is determined to walk the distance. मुकेश कहता है वो मोटर गराज में जाकर मैकेनिक का काम सीखेगा, पर गराज तो दूर है, वो पैदल जाएगा। Do you also dream of flying a plane? He's suddenly silent. No, he says, staring at the ground. The narrator asks Mukesh whether he also dreams of flying an airplane. Mukesh answers simply, staring at the ground with shyness, that he doesn't dream of flying airplanes. For him, flying a plane is not part of his everyday life. राइटर पूछती हैं कि क्या वो प्लेन उड़ाने के भी सपने देखता है? मुकेश बहुत ही झिझक के साथ नीचे देखते हुए उत्तर देता है कि वो ऐसे सपने नहीं देखता है। In a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. Mukesh feels embarrassed when he answers in a murmur because such a high ambition does not match his reality, but he does not have any regrets for that. मुकेश बहुत हल्की आवाज़ में उत्तर देता है क्योंकि वो बहुत एम्बैरस फील करता है। ऐसे ऊंचे सपने उसकी ज़िंदगी के साथ मैच नहीं करते हैं, पर उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. Mukesh is satisfied and happy to dream about cars that he sees running fast on the streets of his town, but hardly any aeroplane flies over Firozabad. Planes are a distant dream for him, which is difficult to come true. अपने शहर की सड़कों में भागती कार के सपने देखने में ही वो खुश है, और फिरोज़ाबाद के ऊपर से वैसे भी ना के बराबर प्लेन उड़ते हैं। प्लेन्स उसके लिए एक दूर का सपना है जो सच होना बहुत ही मुश्किल है। With this, the chapter is over. Hope you found it useful. Don't forget to like the video. I'll be looking forward to check your comments. Hope you have not forgotten to subscribe my channel. Thank you. Bye.